पैदा हो गए हुए हैं उनको हम क्या कर रहे हैं? दिस इज अ ज़्यादा बड़ी इमरजेंसी है कि हम प्रोडक्टिव बनाएं, उनकी एनर्जीज को चैनलाइज करें। और सारे मिलके जब तक ये नहीं करेंगे, अकेला पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट तो कुछ भी नहीं कर सकता। सो यही गुजारिश है सबसे, तमाम स्टेक होल्डर से, काइंडली इसको अच्छी सोच के, और हर चीज़ जो है, जैसे ये कुछ चीज़ों को चैनलाइज कर रहे हैं, तो ये फैमिली प्लानिंग और ये जो पॉपुलेशन की मैनेजमेंट है उसकी भी चैनलाइजेशन की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। से हमारे साथ हम साहब बेटा बाइक बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए, मौका देने का, और इस इवेंट में पार्टिसिपेशन के लिए इन्विटेशन का। मैं इस प्रोसेस का हिस्सा रहा हूँ और मैं पिछले 10 साल से पॉपुलेशन मैनेजमेंट पे काम कर रहा हूँ। यकीन कीजिए, जब हम सब लोग देखते हैं, जब कम्युनिटीज में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो बहुत दुख होता है उनकी हालत देखकर, उनके घरों की हालत देखकर, उनके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको देखकर, और फिर उनकी जो फैमिली साइज हम देखते हैं तो फिर उससे और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। उनके अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं और उन्होंने कितने बच्चे अपने यहाँ पैदा कर लिए हैं, और वो खुद तो एक पॉवर्टी जो लो लाइन है उससे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उन्होंने 5, 6, 7, 8, 10 और लोग ऐड कर दिए हैं फ्यूचर के लिए कि वो भी पॉवर्टी की लो लाइन से नीचे जिंदगी गुजारे। चैलेंज वहां पर आता है जब वो इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते, और इसके लिए किसी भी तरह की कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने के लिए मुख्तलिफ तरह के बहाने होते हैं। तो उसको, इस इतने बड़े चैलेंज को, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को समझाना, बताना और इस पर अमल करवाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए यकीनन गवर्नमेंट तो सबसे आगे है ही है, लेकिन जितने स्टेक होल्डर्स होंगे, जितने लोग काम करने वाले होंगे, वो कम पड़ते दिखाई देते हैं। तो ये क्योंकि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौमी जिम्मेदारी है, और हमें इसी सोच के साथ काम करना चाहिए कि हम जितना अपना रोल प्ले कर सकते हैं, हमें उसको एक्सटेंड करना चाहिए, उससे मैक्सिमम पर जाना चाहिए, ताकि हम कम से कम आने वाले कुछ सालों में इससे ज़्यादा अगली जनरेशन हमसे जो बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। और आपकी इस एफर्ट की वजह से जो आप यहाँ पर कर रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि जितना आपने लोगों को इकट्ठा किया है, जितने स्टेक होल्डर्स को, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम समझते हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर जो इस वक्त है इससे ज़्यादा बेहतर होगा। लोगों को समझ आ चुकी होगी इसमें। यकीनन मुझे ऐसा लगता है कि गुर्बत भी एक फैक्टर है, कि जब पैसा लोगों को पता लगता है ना कि फीस नहीं दे सकूंगा मैं ज़्यादा बच्चों की, वो भी एक फैक्टर मुझे लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो बहुत जो एजुकेशन में नहीं जा रहे, जैसे 2.5 करोड़ या 3.5 करोड़ की तादाद बच्चों की और स्कूल बताई गई है, सवाल उन बच्चों का ज़्यादा बड़ा है कि उनके साथ क्या किया जाए। थैंक यू। बेटा किधर है वो भाई? चेंज कर। For inviting me. Work that you have done in this area, a lot of work requires to be done, and the most important areas to focus in Pakistan is on those who are the ones who are the marginalized people, people below the poverty line, women, children. So, I mean, this is amazing work, and congratulations, Dr. Nadeem.
Legal team for doing this amazing job and for organizing this ceremony and for disseminating the results, and the presentation was really nice. And I think that the stakeholders can do a lot, as you just said, that we need to we need to take the first steps, और हमें अपनी क्षमा जलानी है. तो जितनी भी and because I'm from the education sector, I think the education sector can do a lot in creating this awareness, because this awareness needs to be created at all levels. So in the higher education, in the primary education level, at all levels, and also in the teachers, because teachers, they play an important role in developing the next generation. So I'm sure that what I've heard today and what I've learned today, I'll be taking it away, and I'll be a bridge between the work that is being done over here and my own university and institution and the education sector. So I think it's a job that needs to be done together by all of these stakeholders, and this is a wonderful activity to connect all these stakeholders together, and the way forward is definitely very bright. Thank you very much. Thank you. Working as a direct advocacy, and we were working on the same areas to work and showcase the strengthening of SRHR in Punjab. And I think it's a very great initiative, and we all collectively, it's a holistic approach. It's not only the health sector who has to do it. It was all these sectors to combine together and to work collectively to promote it. And secondly, I think that empowered women is one of the initiatives we all should be focusing on, because I see a lot of gender balance sitting here. So I'm congratulating the Save the Children as well as to UNFPA for taking such a great initiative, and wherever you guys require us, we're all there with you guys, because in the end, we are supporting the SDGs, and all the SDGs are interlinked with each other. So promoting women empowerment, promoting SRHR is one of the initiatives we need to think about it, because controlling the population is very important. I was telling even previously too, I was working on the Suo initiative, which was the population management, and I was the co-chairperson for it, and we were working with the ministries in regard to it, and how to control the population, not in the lower sector, but because we have a lot of youth, which is the bulging youth now. And if we don't tell them the importance of the population control, it will never stop. So how we need to collectively think about the innovative ways and how the creative ways to bring the youth together in an interactive way, so that we control the population management, create the awareness that it's not only the population which is being affected, it's the environment sector, it's the health sector, it's the energy sector. All these sectors are interlinked. So thank you, Brigadier Sir, for calling me. It's always a pleasure to have myself around these sort of conferences. Thank you. And incidentally, we have Colonel To thank Brigadier Nadeem for inviting me on this informative forum to speak and to identify the problem. I think so it's more than 95% work done, and the problems are identified, and we have provided a forum where all the stakeholders are sitting and they can discuss and they can collaborate, and a multi-sectoral approach that is much needed in this sort
requires and what this forum requires, and this is what is required at the international level. I thank you all for giving me this opportunity to speak on this forum. Thank you very much. Thank you. और होता है कि जीडीपी का डाटा अवेलेबल नहीं होता जो कि वैलिडेटेड हो, तो कम से कम इन्होंने जितनी एफआईआर पंजाब में इस हवाले से दर्ज है इनके पास डाटा अवेलेबल है। तो सर मैं आपसे चाहूंगा अगर आप कुछ कहना चाहें। और बड़ी मुझे खुशी हुई है आज की स्टेक होल्डर गैदरिंग, और स्पेशली जो ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे कि रेजिलियंस ग्रुप जो एक फंड ऑपरेट कर रहे हैं। बाकी हम जेंडर सेल अब बन चुका है पंजाब पुलिस के उसमें आईजी साहब के इनिशिएटिव के बिहाफ पे, और उसमें हमने स्पेशल सेक्सुअल ऑफेंसेस के यूनिट्स, इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट्स बनाए हैं। उसमें वीमेन जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन बहुत एनहांस की है, दैट्स मोर देन 34% नो। अब जो भी जीबीपी के जो ऑफेंसेस हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन और उनकी फर्दर प्रोसिक्यूशन तक उस चीज़ को देखा जा रहा है, और इसमें ये खुशी की बात है कि हम इस चीज़ को चैलेंज कर रहे हैं, इस गैदरिंग को, और कांग्रेचुलेट करते हैं आपको। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। obviously domestic violence हो रही है, दूसरा एजुकेशन राइट, तो इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा बता दें। थैंक यू। Because they are the most neglected group in any disaster. तो हम जो रेजिलियंस करते हैं ग्रुप हमने डेवलप किया है, there is a representation from your group. So we are going to get the input for all the activities which we are going to plan based on resilience. Okay? तो मैं अभी आपको बुलाने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता है पार्लियामेंटेरियंस के बगैर तो कोई चीज मूव नहीं करती। रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो नथिंग कैन डू। तो प्लीज आप जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद इदरीस है और मैं टीवी सेक्टर से हूँ, टेक्निकल लोकेशन। मैडम ने जैसे बात की पॉपुलेशन की 65% हमारी यूथ है, तो आई थिंक इट्स ब्लेसिंग अगर हमारी 65% है, उसे डायरेक्शन देने की जरूरत है, और जो बेहतरीन डायरेक्शन दी जा सकती है वो हाई एंड टेक्निकल और हाई एंड कोर्सेज उनको करवाए जाए। वो जिसे हम कह रहे हैं कि हमारे लिए ठीक नहीं है, वो हमारे लिए फॉरेन रेमिटेंसेस पाकिस्तान में ला सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि आईटी सेक्टर ने बहुत बूम किया है 2020 के बाद, तो एक तो हमें उसको अपने एजेंडा में शामिल कर लेना चाहिए कि 65% अगर है तो हमारे लिए ब्लेसिंग है, और इनको हम हाई एंड कन्वेंशनल ट्रेडिशनल कोर्सेज करवा के उनको स्किल्स की डोमेन में ले आए। पहले लेवल पे हमें इसको करना चाहिए तो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। सेकंड लेवल पे फिर हमें उनको एजुकेट करना चाहिए, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको मिलके फिर दूसरी एजुकेशन पे जाना चाहिए। जब आप फाइनेंशियली थोड़ा सा बेहतर होंगे और इन बच्चों को फाइनेंशियली एक ट्रैक पे ले चलेंगे तो मेरा ख्याल है आपके काफी सारे प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सर वेरी वेरी मच।
I'm a philanthropist and MD Shamim Group of Industries. I welcome you all to such an amazing event by Save the Children. And as Simon said, I vouch for it. I thank Brigadier Saab for inviting us all and talk about this important agenda which is going on. Yes, population control, childbirth, these all problems are existing. My whole work or my whole background is South Punjab. मैं लोधरा और भावलपुर और मैं उन देहातों के बारे में बात करना चाहती हूँ. अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि वहाँ पे जहाँ बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे की गई पॉपुलेशन के बारे में, ये देखिए कि एक मिशंस बनाए गए हैं, एजेंडास बनाए गए हैं, लेकिन आज भी खवातीन, क्योंकि ये एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, ये नहीं डिसाइड कर सकती कि बच्चे कितने होंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने किए जाएंगे, उनकी फिजिकल हेल्थ किस तरह से होगी, हाउ विल दे मैनेज दैट. और चाइल्ड बर्थ आज भी मिडवाइफ्स कर रही हैं, हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकते वो लोग. एंड द अदर थिंग अबाउट अबॉर्शंस एंड दीज थिंग्स इज कंसिडर्ड अ टैबू. एंड अर्ली जो मैरिजेस हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ केस. देयर वाज अ गर्ल, बिकॉज मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो की फोकल पर्सन रह चुकी हूँ. रेड क्रेसेंट में मैंने काम किया है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के तौर पे. आई हैव बीन बोर्ड मेंबर फॉर लेबर मिनिस्ट्री. So I personally have visited and seen people in that problem कि एक छोटी बच्ची है जो कि 12 साल की है, उसे दुल्हन बनाया गया क्योंकि वो बच्चे बचपन में गुड्डे और गुड़ियों के साथ खेलती है. हम बच्चों को बचपन में जो प्रिंसेस एल्सा की और बार्बी की स्टोरीज हैं, एक प्रिंस ही आके उनको बचा रहा है. एक जो बचपन से डिज्नी सिखा रहा है, वो एक प्रिंस आके बचा रहा है. वो औरत जो है, अगर वो एलिस इन वंडरलैंड भी है या वो भी है, वो काम कर रही है या उसका जूता भी गुम गया तो प्रिंस को ढूंढना पड़ा. सो टुडे द आइडिया हैज चेंज्ड. women themselves are empowered और empower करेंगे हम खुद. क्षमा लाएंगे, हाथ से हाथ मिलाएंगे. we are going to do it ourselves. उस बच्ची के साथ ये किया गया है कि मौलाना साहब आए हुए हैं, शादी हो रही है. I went with police because I liaised with them. और वहाँ जाके जब उस बच्ची से पूछा, उसको खुद भी नहीं पता था मेरी शादी हो रही है. शी थॉट कि बस ये बुढ़े बुढ़ियों का खेल है. एंड शी वाज हैप्पीली गेटिंग मैरिड और जेवर पहना हुआ है. और उस इवेंट को उसको खुद पता ही नहीं है बच्ची को. शी वाज लाइक कि बस मुझे लेके जा रहे हैं. और आदमी जो है वो तकरीबन 60 से 65 साल की उम्र का था. एंड ही वाज टेकिंग अ गर्ल ऑफ 12 years old. तो द प्रॉब्लम एंड द आइडिया इज कि जब आप एम्पावर्ड नहीं होते, औरतों को मैंने वहाँ पे सिलाई सेंटर खोल के दिए हैं, कायनात के नाम से कायनात सिलाई सेंटर है, ताकि वो एम्पावर करो उन्हें, जो अपने घरेलू मसाइल को जब वो एम्पावर होंगी. हम सब तो पढ़े लिखे हैं, मैं खुद MSc हूँ मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से. मुझे तो नहीं पता ना घर में उस औरत के साथ क्या जाती है, क्या मसाइल है. दहेज के ऊपर आग लगा देते, दहेज नहीं दिया तो बारात नहीं आती. तो द प्रॉब्लम्स आर रियल टाइम. जब हम इस तरह के प्रोग्राम्स में आते हैं, इन लॉन्चेस में आते हैं, वी फील एनकरेज. आई हैव वर्क विद लोधरा पायलट प्रोजेक्ट. आई हैव वर्क, अभी सर ने डिस्कस किया तहफ़्फ़ुज़ घर का, ये जो इनिशिएटिव है ट्रांसजेंडर्स के लिए, मैंने तहफ़्फ़ुज़ घर को सपोर्ट किया लोधरा में. वहाँ पे हमने जाके उनको रहने के, खाने पीने के मौके दिए, सिलाई मशीनें दी. अगर वो कहीं पे घूमे हुए हैं या डेस्टिट्यूटेड है तो वो वहाँ के रह सकते हैं. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स. एंड वन ऑफ माई अचीवमेंट इज कि चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो, मुझे पोस्ट तो मिल गई थी चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो की, लेकिन वो लोधरा और भावलपुर दोनों की थी. तो भावलपुर में जो ब्यूरो था वो भी जजमान में था. इट्स रियली रियली फार अवे. जो बच्चे पुलिस रेस्क्यू कर रही थी, पहले पुलिस उनको मिसयूज कर रही थी, उनको अब्यूज कर रही थी, फिर वो वहां तक पहुंचाए नहीं जा रहे थे, उनको रेलवे स्टेशन पे और बेगर्स की जगह पे छोड़ा जा रहा था. एंड देन केम अ टाइम कि मैंने उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी साहब के साथ मिल के और हमारे गुजार साहब के साथ मिल के वी हैड अ प्रोग्राम. हमने वहाँ पर लैंड अप्रूव कराई और अब लोधरा में अल्हम्दुलिल्लाह चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो एग्जिस्ट करता है. So these kind of things which are real time, I am doing real time work. I also support women cricket. शमीम प्रीमियम लीग जो है उसकी मैं MD हूँ. और साउथ में जितनी क्रिकेट हो रही है इस वक्त आई एम सपोर्टिंग द वुमेन, आई एम एनकरेजिंग द यंग गर्ल्स. एंड सबसे बड़ा जो मसला होता है इन दी एंड टेकिंग योर लेस टाइम, बच्चों के, खवातीन के माँ बाप को कन्विंस करना कि आपकी बच्ची हमारे साथ जा रही है तो वो सेफ है, उसके साथ कोई जुल्म और ज्यादती नहीं होगी. जिम्मेदारी लेना उन नौजवान बच्चियों की. सो द आइडिया इज दिस कि इफ यू कम टू, हम सेंट्रल पंजाब की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट अपर पंजाब, वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर ऑलरेडी अवेयर. इफ यू कम टू साउथ पंजाब, द प्रॉब्लम्स आर स्टिल द सेम. वी आर स्ट्रगलिंग, वी आर फाइटिंग,
and we will make sure that women empowerment happens. We save the children, we save the women from all the violence, and inshallah together, as we see, Save the Children is doing great work, the Brigade Servant is involved, academia is involved, World Bank is involved, all these organizations are helping and coming together and creating awareness. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you, ma'am. So, thank you so much, Dr. Saab, and thank you everyone for participating in the Q&A session. Moving on, I'd like to invite our Director, PQI, to come on the stage and give his closing remarks. Thank you. क्लोजिंग रिमार्क्स में मेरे ख्याल है जितनी बात हो चुकी है और जितने एक्सपर्ट्स ने बात कर ली है वो सूरज को चराग दिखाने के मुताबिक होगा। अगर मैं मज़ीद कुछ कहूँगा, लेकिन खुशी इस बात की हो रही है कि आज फिर से हम दोबारा इकट्ठे हुए हैं और हमने जो टॉप लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है पंजाब की, उनके साथ ही बैठकर रेजिलियंस फ्रेमवर्क के हवाले से बात की, उनको इन्फॉर्म किया कि हम उन्हें थोड़ा सा बताया कि हम कहाँ पहुँचे इस तमाम प्रोसेस में। सो थैंक यू सो मच कि आप सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया। पिछले सेशंस में भी जो रेफरेंस ग्रुप है उसको फॉर्म किया, उसकी GRs फाइनलाइज की with support from our colleague Amna, with support from with the expertise of Dr. Nadeem Sahab, so or under the leadership and under the blessings of DG Health and IRMNCH department and all other departments who are sitting over here. So really very excited to see all this, और आप लोगों का जो commitment है और enthusiasm है इस तमाम assignment के हमारे से really appreciated. Moving forward, जो सबसे important और critical stage of next आ रही है costing plan की, I think that is also a very important stage हमारे लिए, जिसमें जब आप लोग next काम करेंगे, so we definitely would like to see the same zeal, same enthusiasm and eagerness from all the stakeholders involved in this. Or we are looking forward to a wonderful costing plan. Dr. Saab, moving forward, and I'm sure with your expertise we will be able to achieve this really tough target as well. बड़ी ज़बरदस्त बात की डॉक्टर साहबा ने कि यूथ का क्या करना है, तो मेरे ज़हन में ये आ रहा है कि हम यूथ के प्रोडक्टिव होने के साथ उनकी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को भी देखें। और डॉक्टर साहब देखिएगा कि किस तरह से ये जितनी भी यहाँ पर बात हुई इंक्लूसिवनेस की, GBV को एड्रेस करने की, और बाकी जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, इकोनॉमिक इशूज़ को एड्रेस करने की, तो जिस हद तक ये मुमकिन हो सके, एकोमोडेट किया जा सके इसमें, तो that would really be great to see. So thank you so much जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने अपना वक्त दिया, आज आए यहाँ पर, and looking forward to meet you again after some time when we have our next event and we discuss the costing plan and other. Thank you so much, बहुत शुक्रिया। Thank you, Nick. If you could just thank you, Naeem. I'd like to conclude our today's event. Thank you so much everyone for coming to the event today, and I now request you all to please join us for lunch, which was supposed to be at 1:30, but I think we're just a few
half an hour late, but then once again, I thank you all on behalf of Save the Children and UNFPA for coming and joining us today and sharing your thoughts with us. Thank you, and let's have lunch together. That was